Good evening, students. In previous lecture, we have studied about the history of Roman Empire and its geographical feature. As you all know, Roman Empire was a very vast empire, mainly covers Europe, North Africa, and Asia. River Danube helps in trade and maintaining the security, and also you have read now that how Roman Empire developed as a state by Augustus, and there were so many rulers in Roman Empire like Octavian Augustus, Julius Caesar, how Augustus killed the sons of Julius Caesar and finally captured the throne, how the rulers changed the destiny of an empire with the passage of time. Students, today we will discuss about the sources to understand a history of an empire, of any empire. There are various sources which is very important, which I'll tell you today. The first one is the textual document. Students, the Roman were very famous for keeping a lot of written record. It was how they kept their large empire so organized. They had a record on every Roman citizen, including things like age, marriages, military services. Even they also kept the written records of the wills, legal trials, and the decree made by the government. So the first source here is the textual document. Textual document means the written records. Whatever they saw, whatever they observe, they finally convert into the written form. It means the Roman Empire, they had a lot of written record about the Roman Empire, and the one of the textual document tell us that the Romans and the Iranians, they were the competitors that time, they were the rivals, and both involved in the constant war. And finally how Roman, they conquered a war against the Iranian and finally captured that area where the Iranians were lived. So the textual documents, it mainly tells the works done by the Roman Empire, the accomplishments, the achievements of an empire. Especially the main point here, I want to tell you that the textual documents, their accountability and their reliability, I can say, it means no manipulation was done by the Roman Empire. What exactly they observe, what exactly they did in their empire at that time, it means जो kings ने किया या जो वहाँ की ऑडियंस थी, जो वहाँ के लोग थे, उनके बारे में जो जो देखा गया एग्जैक्टली अचीवमेंट्स का, एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन का वो लिखा गया है. इट मीन्स देयर इज अ नो मैन्युपुलेशन इन राइटिंग द टेक्सुअल डॉक्यूमेंट्स. एंड स्टूडेंट्स, अनल्स कह दो या एनुअल्स कह दो, they were very famous. They were very famous at that time. Annals क्या होते हैं? The annals mainly includes a wide array of information, including the religious document, the name of king, the deaths of priest, and the various, if any natural disaster happened, also written in annals. अनल्स जो थे ईयर टू ईयर पब्लिश होते थे, जैसे हमारे इंडियन कैलेंडर्स होते हैं, उसमें तो जस्ट डेट दी होती है, लेकिन जो रोमन एम्पायर था वो अनल्स को मेंटेन करते थे. अनल्स ऑल्सो नॉन एज एनुअल्स, विच गेव अस द ईयर टू ईयर इंफॉर्मेशन. पूरे साल क्या हुआ, किंग्स, उनकी अचीवमेंट्स, देन पीपल अंडर द किंग, उनकी अचीवमेंट्स, सीनेटर्स कल मैंने आपको बताया था कि सीनेटर्स जो थे मेनली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हैंडल करते थे. तो उन सब का जो रिकॉर्ड है वो हमें रिटन में मिलता है अबाउट द रोमन एम्पायर. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट sources that we have to understand here is the textual document. It means the written text written by the people of the Roman Empire, and textual documents
are mainly written, I can say the printed documents that present the all the data in the form of any article or any document. Especially बच्चे it contains an important historical information about a person, about a place, an event, and I can say it can serve as a primary source because there is a no manipulation in it. I can say this is the first hand information. The textual document can be the first hand information, and jo historians say they mainly interested in this because it described day to day lives of the ordinary people, indicating what they ate, their interaction with the king, and I can say their states of mind. So the first most important source is the textual document. The second one is the documents, and the third one is the material remains. Student, documents क्या होते हैं? They are inscribed inscriptions like on the wall, on the rocks. जो आप वॉल्स पे इंस्क्रिप्शन देखते हो, एंड दैट टाइम इन रोमन एम्पायर जितनी भी इंस्क्रिप्शन थी इट वॉज इन लेटिन लैंग्वेज, एंड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपना क्या काम करते थे मेनली, ये भी रिटर्न में थे, ऑफकोर्स रिटर्न में थे, लेकिन ये जो थे ये बाहर वॉल्स पे या रॉक्स पे जो भी किंग का एक मैसेज आता था वो मतलब प्रिंट हो जाता था वॉल्स पे, and the documents were mainly created to send a message or a decree of the king to the public. क्या चल रहा है एम्पायर में, कल क्या होगा, कितने टैक्सेस लगने हैं या कितने टैक्सेस इंक्रीज होने हैं, जो पूरा का पूरा समरी थी रोमन एम्पायर के वर्क की, एडमिन की, वो हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पढ़ते थे. मतलब वहाँ पे किंग जो भी ऑर्डर देता था या जो भी डिसीजन आता था वो वहाँ वॉल्स पे इंस्क्राइब्ड हो जाता था, उसे हम डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे. और जो आपने प्रीवियस पढ़ा टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट है इन द रिटन. इट मीन्स सपोज मैं अगर आज किसी चीज़ का रिकॉर्ड रख रही हूँ, एक तो मैं हैंड रिटन लिखूंगी, ठीक है ना, कि मैंने इतना खर्चा यहाँ किया, इतना ये हुआ, मेरे अंडर इतने लोग हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड मैं खुद मेंटेन कर रही हूँ किसी नोटबुक में. दिस इज द टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट. एंड द डॉक्यूमेंट्स इट इंक्लूड्स the inscriptions on the wall, on the leaf, on the palm leaf. So on the coins, अगर मैंने coins पे भी कुछ ऐसा कुछ information लिख कर दिया है तो it includes under the documents. And student, in Roman Empire there were so many various documents. एंड स्टूडेंट बहुत से डॉक्यूमेंट्स आज भी हमें रोमन एम्पायर के मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं. इन द हिस्ट्री यू ऑल आर अवेयर अबाउट द अशोका इंस्क्रिप्शन लाइक इन द 3rd century. Similarly, the Roman Empire also having the various inscription which we can find today. So the second one is the document, the main source which is giving the information about the Roman Empire, and the last one is the material remains. Material remains mainly include the buildings, or I can say the monuments of the Roman Empire. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि एम्परर बनवाते हैं, उन्हें हम मटेरियल रिमेन्स के अंडर डालेंगे. लाइक लीडिंग टावर ऑफ पीज़ा इज़ वेरी फेमस फॉर रोमन एम्पायर. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको डिस्कस करूँगी वो है पेपरस के बारे में. पेपरस क्या था? मेनली एक प्लांट था, ठीक है. उस प्लांट से हम पेपर की शीट्स बनाते थे. हम मतलब रोमन एम्पायर उस टाइम पे ये काम कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था. बाद में चाइना ने जाकर ये पेपर इन्वेंट किया है बहुत टाइम बाद. तो उस टाइम जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तो पेपरस जो एक प्लांट था उसे क्या करते थे, उसे वो बहुत ज़्यादा गला कर, बहुत ज़्यादा मेल्ट कर कर उसे कैसे ना कैसे शीट्स में कन्वर्ट करते थे, और फिर उस फाइनली शीट्स को धूप में रखकर सुखाने के बाद फाइनली उस पर इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी. एंड स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू दैट इन रोमन एम्पायर clay tablets also
some clay tablets also found there. Clay tablets क्या होता है? Also a material remain. Clay tablet जिसमें मिट्टी पे इंस्क्राइब्ड किया जाता है. हम मिट्टी के ऊपर जो है इंस्क्राइब करते हैं, हम जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लिखते हैं. और सिमिलरली स्टूडेंट, जो पेपरस शीट्स थी, हु रीड द इंस्क्रिप्शन ऑन पेपरस, the person is known as a papyrologist. And student, material remains, we can found lot of material remains to know about the Roman Empire. So today we mainly cover, the first is the textual document, the second one is the documents, and the third one is the material remains. Three are very important from the paper point of view. And student, ये जो तीन documents हैं, always keep in your mind, this is not only for the Roman Empire. I think these three sources, the written records, the documents, the inscriptions, and the material remains, it means the monuments and the coins, always created by every empire. हर empire, चाहे हम आगे बाकी एम्पायर्स के बारे में भी जब पढ़ेंगे, तो ये जो सोर्सेज हैं, दे आर कॉमन इन एवरी एम्पायर. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. If you have any doubt, you can call me and or WhatsApp me. I hope this topic will be clear to you. Thank you.